Uh, so welcome friends to today's session, and with me today is my friend and colleague PR Sarabjit. And so today we are going to take this session, and I'm going to introduce him to you. So if there is anything specific to his service, his optional, you can ask those things. Apart from that, you can also ask him any generic questions also in general about interview process. Okay, so before we begin, could you kindly turn on your video if that's all right? If you have the exigency not kindly turn it on. Okay, keep yourself muted, but you can turn on the video. So in the first few sessions, we tried to we picked up a few topics like understanding the psychology of the interviewer. Then we also had this session on DAF preparation. Shreyank sir had taken a session, I guess, and one session was taken by an official on document submission. So continuing with that series after the session by Nitesh sir and Santosh sir, today we are going to continue with Mr. PR Sarabjit. So let me introduce Mr. Sarabjit to you. He is actually one of the youngest officers in our batch. In 2023 batch selected by UPSC, and he has gotten into Indian Forest Service this year with rank 108, right? 104, right? And Sarabjit was actually Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana KVPY scholar. He has done his graduation from IIT Mumbai in 2020 pass out, so he's very young. Okay, and he was selected in Coal India Limited NTPC IOCL, out of which he chose to work in IOCL in Haldia Refinery. So after that, he took this attempt, and now he is here in Lavasna with the foundation for the foundational course. So over to you, Sarabjit. I guess you could initially share a few tips and tricks, maybe your experience in the UPSC interview, and after that, whatever questions our OS interview aspirants pitch you in, you could perhaps answer them. And by the way, we should not have any language barrier. तो पिलाने तुम्हें चाहिए ओडिया किंबा इंग्लिश किंबा इवन हिंदी रे भी क्वेश्चन हमको पचारि परिबे जो भी लैंग्वेज रे कंफर्टेबल अछो पचारि परिबे तीनटा लैंग्वेज ठीक है ओवर टू यू सर्वजित First of all, धन्यवाद सौरभ भाई for the introduction, and hello friends, नमस्कार भाई ओमने मु PR सर्वजित जेमती सौरभ भाई कहले डायरेक्टली जदि हम इंटरव्यू रो प्रिपरेशन विषय भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अपन को ओडिशा सिविल सर्विसेज रो इंटरव्यू स्टेज पर बोले जंदी this just the last stage, and you have to stretch a little bit and you will find your names in the list. So cheer up, ଆଉ ସବୁବେଳେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ सर्विसेज यूपीएससी ओपीएससी जोटा भी धरନ୍ତୁ कॉन्फिडेंस इज द की आपण केते पढंतु न पढंतु इट मैटर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि जदि आपण कॉन्फिडेंट रहिबेनी आपण जदि बहुत भी पढिथेबे आपण को पर्सनालिटी रे सेउडा सब देखाबोनी सो फर्स्ट जो एडवाइस मु देबी कि आपण जेते भी पढन यू हैव क्लियर्ड मेंस that means you have the sufficient knowledge which is required. तो अपन खाली confident रहंतु कि मु भलसे सिनो जीबी इंटरव्यू रो whatever schedule I have been given से तो मु जीबी और इंटरव्यू टा confidently as a जेमती जीबी बोर्ड मेंबर्स रहिथेबे ताको जे ओटे नॉर्मल कन्वर्सेशन रखिबे हैना. सो फर्स्ट जो मु एडवाइस देबी दैट इज टू बी कॉन्फिडेंट. सेकंड एडवाइस जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट है कि ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द बोर्ड. किछि एमती हवा कथा यूजुअली नो हमको एडवाइस करा हुए कि क्वेश्चन आंसर टाइप हेबा कथा नो किसी गोटे फर्स्ट क्वेश्चन देले तापर हम आंसर दोचु देन अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर आंसर यूजुअली सेमती एक्सपेक्ट करा जाय ना. एक्सपेक्टेशन एटा था कि वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन से किछ कथा हेले हम किछ कहिलु सेउडु से किछ ओड भाबले तापर रैंडमली किछ कथा होचुदी. सो जदि हम ओटे कन्वर्सेशन टा इंश्योर कर परछु that is the best thing which is possible. Okay, so that is second. Again confidence jodi thaybo tale eoda सब हम कर परिया. May interrupt in one thing. So I guess Sarabjit, what you are trying to say is कि
if the interview moves in very smoothly, then it will feel like a conversation. Exactly. If the interviewee is not giving, maybe not taking it as a conversation, making them feel like it's just a question answer session, then it will not be as smooth. Yeah. case रे बहुत भला मार्क मिलिबनी, right? Exactly. But having said that, that doesn't mean कि हे पारे केबे केबे इंटरव्यू बोर्ड रही मन रे एमति थाय कि आको टिके अनकंफर्टेबल करेया क्वेश्चंस खाली दे चलिया सेमति हे पारे. That is very much possible, but at any point of time एमति भाबे कथा नो कि ना भाई तो कहितले कि एमति कन्वर्सेशन होवा कथा ये तो एमति चललै तले हम कोन करिया से भाई the third from here, the third advice is that never ever judge your interview in between the interview itself. माने जेतले इंटरव्यू चालू जे सेतले मुंड रे चले कथा नो कि मोर भलो हला मोर खराब जाउची कोन हला न हला ए क्वेश्चन मु कोन कहि पाइलिनी एटा एबे मन पडुची सेमति केबे नो कथा वार्ता रे कोन थाई जदी किसी जो मन पडुनी डायरेक्टली सेति बोले जदी मन न पडला आई एम सॉरी कहि के आगु बढ़लो फुनी एमति नो कि मोर परे मन पडिला ताबे तुम मन पकोछ कि नहीं सर दिस इज समथिंग दैट आई रिमेंबर राइट नाउ एमति जदी करबो ताले सेति के बहुत फ्लोटा ब्रेक हो. So that is why never ever judge your interview in between a particular while the interview is going on. You should not judge yourself. Okay, that is the third advice that I'm giving. Apart from that, ठीक है preparation विषय कहूँ ची interview preparation हमें केमती करचु. Normally सबुटु main इंसोटा अपन को draft था detailed application form उसी से भी था draft था हो. तल सेठी each and every word जोड़ा भी से draft लिखाई ची ता माने नॉर्मली हमें लेयर्स रे प्रिपरेशन करू. लेयर्स रे प्रिपरेशन माने फर्स्ट जो वर्ड टा हला जेमति कि मु निज विषय कहूचे मोर ना रु स्टार्ट करबी पी आर सर्वजित तले पी कहीं लिखाई ची आर कहीं लिखाई ची सर्वजित रो माने कोन येला गोटे लेयर ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट में से वर्ड्स को मीनिंग जोड़ा को आप डिसाइफर करचो तापर हे पर तापर हमको टिके मन रे ई जिंसटा को टिके एक्सरसाइज करे आसी कि कमाइने मु जहां आंसर कहिबी from that answer only I might expect some other questions. Right. से भाई initially first layer हमें preparation करिया तापरे if time permits us हमें second layer को जीवा कि सर्वजित हिला ताले दिन मु example टा दोची कि सर्वजित सी कहले कि सर्वजित रो माने कोन ताले मु कहली कि सर्वजित कि जोड़ा कि जित जंती सब दिन सब ताले से कहयो कि हां एमतिया पर्सनालिटी तमरे एक्चुअली तमे निज ना को माने जस्टिफाई करछु कि नहीं एमती एमती क्वेश्चन आस परिबो से तुमको एटलीस्ट सेकंड और थर्ड लेयर पर जदी अपन प्रिपरेशन करछंती ताहले गोटे फुल प्रूफ प्रिपरेशन हे जो कि डैफ रु तो सी आउ बाहर को न जाई परंती एमती टाइप हे परिबो. जेमती मु एग्जांपल देबी मोर निज इंटरव्यू रो मु मोर इंटरव्यू रे हॉबी टा लिखथली कि माइक्रो ग्रीन कल्टीवेशन करी लिखथि माने माइक्रो ग्रीन्स कोन थाय छोट छोट प्लांट्स को कल्टीवेट करबो ताकू हार्वेस्ट करके ताकू एंती सैलेड वैलेड रे पकेबो ताले माइक्रो ग्रीन्स रु छोटो प्लांट ताले सी मोटे इंटरव्यू रे फर्स्ट क्वेश्चन असला कि बोनसाई माने कोन. राइट. सो बोनसाई जदि आपण जानथिबे तो इट इज आल्सो मिनिएचर वर्जन ऑफ ट्री ताले सेटा मु प्रिपेयर करथिली एंड दैट इज व्हाई आई कुड आंसर द क्वेश्चन इन अ ब्यूटीफुल वे. से भाई सेही हिसाब रे आपण गोटे लेवल जदि भितरु जिवे गोटिरा भितरु जदि लेवल जिवे ताले एटा सबुटु भलो होय ताले this is another thing that I wanted to say कि DAF ru start करो first उपरू गोटे layer जो ही preparation करो कि achievements आपण किछ लेखचंती ता विषय टिके पढलो तापरे से तार आंसर तो जोटा आपण प्रिपेयर करथबे से आंसर को आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो that is the second layer. राइट. ताले एटा गोटे इंस हेला आउ गोटे इंस इंपोर्टेंट इंस होला कि मॉक इंटरव्यूज आपण दबार अछि केते मॉक इंटरव्यूज दबार अछि यूजुअली एस्पिरेंट्स को क्वेश्चंस है तार डेफिनेट आंसर किस थाय न मो हिसाब रे जत्ते बंत आपण कॉन्फिडेंट हे जिवे आपन लागियो कि हां एबे तो रिपीटेशन बेले होउची कि हां मते हो कि मु काम बेसिकली आपण देखियो जज कोन करिया अछि आंसर्स ऑब्वियसली जदरोडे इंटरव्यू हुए आपण फर्स्ट देखियो कि आपण कॉन्फिडेंट रहि छि कि नहीं काम रहि छि कि नहीं बेल बेले हम कहू बहुत एंती एंग्जियस हे जाऊ कि कोन क्वेश्चन पजे हम क्वेश्चन ही ठीक से सुनुनु हम डरी जो भीतर डरी जाउछु ताले हमरो एई दिन सोडा को चेक करिया अछि कि हम एंग्जियस होउछु कि नहीं कॉन्फिडेंट रहउछु कि नहीं क्वेश्चंस को बहुत से सुनुछु कि नहीं ताको अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड कर परछु कि नहीं एवडा बहुत इंपोर्टेंट सोडा इंटरव्यू रे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हला क्वेश्चन जा कहउछन ताको बहुत से सुनुछु सुनिया इज द फर्स्ट थिंग जदी
मु सुनी ही बिनी ताले हे पारे सी क्वेश्चन कोनटे पचाचनी मो आंसर किछ अलगा दि दोछ आ सेटा बहुत ही खराब गोटे इंप्रेशन दिए. May I interfere one हाँ, point? Sarvajit, from this thing I remembered one point कि आमे जतबेले भी मॉक इंटरव्यू भलो देकी आसलु भलो फीडबैक ता भितर मते किछि मिलितला कि जेमति कि आमे बहुत हेस्ट रे जोटा कहले कि वी जस्ट जंप इनटू द आंसर तो सेतरे बेले बेले कोन कि क्वेश्चन रो डिमांड आमे मिस करि जाउ. एग्जैक्टली हाँ. So it's a very nice trick. People please try to remember this. Whenever anyone is asking you a question, don't have to immediately answer it. Just take a maybe 10 or 20-second pause. Okay. So when a just take maybe 10-second pause. And even if you know that you know the answer, still structure that answer in your head. Exactly. For example, if they are asking you ki, in the context of gig economy, how do you think that it affects the Indian economy, or what is the challenges to gig economy, or how will it contribute to Indian economy? So semane jetale gig economy term ta kahile hei pare ki tomo mind re bahut sara point already generate hei galani, but wait, do not immediately jump into the answer. Just take a 10-second pause. Should not be too long. Just take a 10-second pause to exactly understand what they are asking, and then structure that answer in your head. Ki, okay, then you can go ki, okay, point number this, point number 2, point number 3, like that. Okay. Yeah. So it would a better way of structuring your answer hi pariyo, better answer hi par rather than ki immediately answer the word. तो सेटा हेले कोन कि तुम माने नर्वस भी होबनी तुम क्वेश्चन रो डिमांड भी मिस करियो. एग्जैक्टली. एउटु मते आउटे भी दिनस मोर भी मॉक इंटरव्यू से मते बहुत कहउतला कि पॉज करिया रे बहुत बड़ा एडवांटेज थाए. फर्स्टली पॉज रे जेमति कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर परिया आ निज आंसर को स्ट्रक्चर करिया. ओटे स्ट्रक्चर्ड आंसर ता जदी कहउछु तार ओटे भलो इंपैक्ट पड़े आ कोन कोन वर्ड्स यूज करूछु सेउडा भी हमें निजे डिसाइड कर परिया. जदी हमें एज जस्ट रिएक्ट कर दोछु क्वेश्चन पचारले हमें रिएक्ट कर दोछु हे पारे हमें ताको ठीक से कंक्लूड कर परियानी नहले बहुत गुड़ा डायमेंशंस खोल दबा जोटा कि हम ऊपर बहुत गुड़ा क्वेश्चंस पचार परिबे. आउ गोटे जिंस थाए कि जेतले भी आपण क्वेश्चंस रो आंसर दोचंती यूजुअली कोन हुए मु निजे एक्सपीरियंस करचे कि मु आंसर एंड करली तापरे गोटे गैप आस जाए माने नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबार गोटे गैप आस जाए और जेतले से गैप आसे तापरे मु भाबे कि हे पारे मु कम पॉइंट्स कहिची आउट के गोटेटा पॉइंट्स एक्स्ट्रा कहि बोले तापरे मु किछि किछि एंदी माने रिडंडेंट पॉइंट्स उडा कहि दिए और सी तापरे क्वेश्चन पचा दुथबे तापरे ओवरलैप ही जाउची. तले यूजुअली कोन हुए इंटरव्यू रे आपण एन्श्योर करिवे देखंतु टिके ए जो गैप्स उडा को टिके एन्जॉय करिया आपण को सिखिया पड़ियो कि कमै ना आपण मेंटालिटी बुझंतु कि आपण जने क्वेश्चन पचाला आपण किछुडा आंसर देले एबे से आंसर को कॉम्प्रिहेंड भी तो से करिवे ना से पे से टिके पॉज नियंती. हां नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिके 5-10 सेकंड थाए सेतियोले तुम भलसे आंसर कहि दियो जी चुपचाप ठीक से बसबो. एमती नो कि तुम पैनिक करिवनी कि हां सिकर आउ किछि क्वेश्चन आसुनी हे पारे मु किछि कम कहि दिछि कि एमती भाबिवनी. तमे निजर आंसर टाको एंड करिवो तापे वेट करिवो फॉर देयर रिस्पांस कि हे पारे से सेउटु किछि क्वेश्चन पचाले नले नेक्स्ट क्वेश्चन किछि पचाले ताले दिस इज द वन थिंग कि एंड क्वेश्चन पूर्वरु टिके पॉज नबो क्वेश्चन सरसला परे भी जदी पॉज टिके होउची ताले ताको डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके ताले ये गोटे दिन सयला आउ गोटे मॉक शुरू जेंति हला कि मु गोटे दिन कहली गोटे कॉन्फिडेंस चेक करिवो आउ गोटे मॉक्स को असेस करियार हला कि तमे स्ट्रक्चर्ड आंसर कर परछु कि नै कि जे किछि क्वेश्चन जदी इनप्रॉम्प्टू किछि क्वेश्चन आसिला मु ताको मन रे भाबी परछु तार गोटे आंसर ठीक से देई परछु पॉजेस ठीक से नउची कि नै. ये हला किछि किछि दिन सोडा हमें मॉक्स रु आइडेंटिफाई करिया. आउ गोटे दिन थाए मॉक्स कि टिके बॉडी लैंग्वेज कि बेले बेले जेमति मु हला डरी देले ए गोडो हमती पैट करे तले सेमते दिन सोडा को जोथा कि तमरा नर्वसनेस उडा को देखाए सेमते दिन जदी तमे नोटिस करछो ताकू टिके कंट्रोल करिया में चेष्टा करिवो. आउ से मॉक सेति बंद दबो जेतोल तमे देखलो कि हां एउडा सब मोर ठीक ठाक हे जाउची तापर मॉक्स दबार दरकार नै. अनदर थिंग कि मॉक्स जो मार्क्स उडा बेले बेले दियंती से मार्क्स रे एते किछि फरक पड़े ना ना कि आ मॉक्स रे भी जेमते टाइप क्वेश्चंस हुए यूजुअली रियल इंटरव्यू रे सेमते हुए ना एते मु यूपीएससी रो इंटरव्यू रो पर्सपेक्टिव रे जदी कहिबी मते क्रॉस क्वेश्चनिंग ता आई डोंट थिंक मते ते कराइतला. This is one point I want to interfere. I think I have said this point to you again and again, and I had also texted this in the group. Do not ever take any marks or even most of the feedbacks given to you by the coaching institutes very seriously.
because coaching institute mock interview is completely different, real interview is completely different. That is first point. Second point is ki देखो what is the purpose of different UPSC और OPSC ର purpose होची civil servant को select करिया, coaching center वालांकर purpose होची कि ସେମାନେ advertisement करिवे, तमे भलो करो खराब करो doesn't matter to them, तुमे जदी बस exam clear कलो and तांकर भलो reels किबा YouTube videos बाहरी गला, then they will get it, I mean they will get views and people will think ki okay this is a good coaching institute because they are getting a lot of successful candidates out of it. So एबे in fact ये जो नाम तो कहया कथा न दुई तीन टा हमरो Delhi based coaching institute रो बहुत major जो institute मानकर reels आसुची, do not ever think that it is anywhere near the real interview. Real interview is very very calm, there is no cross questioning, no grilling at all. Yes, जम्मा sensationalization हुए नहीं real interview. Okay, केही भी तुमको interrogate करिवे नहीं, it's just a personality test. हाँ, से तमे जहा आंसर कहबो से आंसर्स नु ही तुमको जज करिवे, से केबे भी एमति नो कि भूल कहलो ठीक कहलो न ताकू क्रॉस क्वेश्चनिंग करतले ना ये कोन ठीक अछि भूल अछि सेमति हुए ना यूजुअली. अनदर थिंग मोर पे माइंड रे असला कि जेतोले भी आपण इंटरव्यू दोचंती देखो मॉक इंटरव्यू एते तो देही हुए ना यूजुअली दे आई थिंक मु निजे बळे अराउंड 8-9 टा दिथिली. I don't think they have even enough time for 8 or 9 interview given that ki next week will start UG. Okay, so I said ki at max right now we should give 5 interviews. Exactly, ये 5 भी बहुत है नहीं. Normally मु कोन कहिबी जेतोले जदी इंटरव्यू दोचंती तार रेकॉर्डिंग्स तो मिलुई थवा आई गेस, से रेकॉर्डिंग्स को देखंतु आ सेउटू चेष्टा करंतु कि ए क्वेश्चन नो आंसर ता मु एमती कहि देली हे पारे मु टिके बेटर कहि परतंती, तले सेउडा से रेकॉर्डिंग्स को देखि कि निजो टिके इंप्रूव आंसर्स को इंप्रूव करंतु नले कोडे कि मु बॉडी लैंग्वेज किछि अलगा हि होला नले वर्ड्स आउडी इम्प्रूव लूज वर्ड्स उडा के यूज करिवनी इन कैजुअल वर्ड्स उडा ताकू यूज करिवनी टिके फॉर्मल और पार्लियामेंटरी वर्ड्स उडा यूज करिवे जेतोले को कम्युनिटी विषय जदी अपन रेफर करचुंदी ताले विथ रेस्पेक्ट रेफर करियर अछि किछि जदी माने प्राइम मिनिस्टर जे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को विषय कोचन ताले ऑनरेबल यूज करो एमती अपन को यूज करिया पड़िबो टिके लैंग्वेज टा को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जोडा कोन ना सेमते अपन लैंग्वेज यूज करिया पड़िबो एमती लूज वर्ड्स कि you know like guy this is like सेमते यूजुअली सेटा को टिके माने निजे रेकॉर्डिंग्स को देखियो कि हां एठी मु यूज कर दितली बदे ना एमती करिया पड़िबोनी सेटा को टिके माइंड रे रखिया पड़िबो. अगेन गोटे जदी मॉक दोचंती तार रेकॉर्डिंग देखंतु आ इंप्रूव करी कि तार जो गलती अछि ताको रेक्टिफिकेशन करी कि दूसरा मॉक पे चेष्टा करन. एमती नो कि मॉक पांचटा कोहै छि ताले जल्दी जल्दी गोटे दिन रे दीदीटा एमती देई कि तार भी किछि लाभ थाय नै यूजुअली. आ गुड थाय कि जो फियर ताको जदी टिके ओवरकम करियर अछि आ मॉक जदी एते कमाने टाइम नाही भलो सब थाय कि या तो घरे जदी कि लोक माने अछंती फैमिली अछंती पेरेंट्स अछंती तांको आगे कर परिबो न हेले जो मिरर आगे आपण प्रैक्टिस कर परिबे. मोर कोन थाय कि मोर यूजुअली एमते थाय कि फेशियल एक्सप्रेशन टिके एमती रे थाय कि मोर जणा पड़ जाय कि डर जाउची नले एमती किछ होटे हां नर्वस अछि तले सेउडा को रेक्टिफाई करिया पे हम मिरर आगे ही कथा अर्थ होंदी टिके निजर सी इनहिबिशन टा टिके रहि जिवो जदी आपण सेमती प्रिपेयर कर परिबे. There is a lot of innovation in general I find in aspirants from Odisha relative to other states. For example, whenever I tell them, ask them to even turn on their videos, they're very very shy. They're like, you know, I cannot see basic bare minimum हमको जितना expose होना है उतना ही होना है. मतलब we don't want anything to be shown. है ना? So you have to, guys, you have to shed this innovation. Okay, have to be very very proactive. You have to be very if not extrovert, at least you cannot afford to show them that you are an introvert. You might be an introvert. In fact, I am an introvert. You are also an introvert. Yes, I am also an introvert. But in the interview, you cannot be like that. So before interview, if you think, okay, chalo, ये तो just ଗୋଟେ ଆମର video session होची, एथिरे हमको कौन ही judge करिया, कौन ही फरक पड़ियो. No, you start behaving like an officer from now on, because it takes time for these qualities to be inculcated in you. Okay, so from now on, for example, if you are going outside, if you are meeting anyone, be proactive, greet them. Okay, don't be shy, do not avoid people's contact, है ना? So you have to expose yourself from right now. Otherwise, on the day of the interview, on the D day, you will find that you are falling back into your comfort zone. Okay.
So next time onwards, whenever you are having any online session, you are having any video call, whatever, expose yourself. Okay, let others judge you, because this is the ultimate judgment point, right? Exactly. Here they are going to judge you. So तुमर कौन जाउचे एबे एबे यदि तुम हम ए सेशन ने तुम के जज कर देले कौन कौन फरक पड़े से एबे एमती देखो नॉर्मली हमर इनोवेशन कोन थाय मु किछि फुल कहि देबी कोन लोक मो ऊपर हसिबे एमती टाइप इट डजंट मैटर राइट नाउ क्योंकि कमे ना ये इंटरव्यू तो तुम दबार ही अछि देयर इज नो ऑप्शन विथ यू आपण एट जदी न करछोंदी सेठी तो करिया ही पड़िबो से में मिस्टेक्स जदी करिया छी एट एति बेले कर दियंतो कोइ से on the D day you cannot afford to do a lot of mistakes. There will be small here and there mistakes, but अगर बहुत सारा मिस्टेक जदी हम आगरी कर दी चंदी ताले से डी डे रे कम मिस्टेक्स हबो आ आपण मार्क्स इंप्रूव हो जिवो. तो दैट इज व्हाई एबे जहां भी इनोवेशन अछि कि मते डर लागुची मते कहया पई इच्छा होनी मु रूम रे खाली पढी दिए हे जिवो खाली पढी देले लेट मी टेल यू इफ यू आर थिंकिंग दैट मु नॉलेज आउटी गैदर कर दिए मु करंट अफेयर्स पढिनी मु टिके सेटा पढी दिए टिके आउ किछि किछि नोट्स मिल जाई छि मोर ऑप्शनल रिलेटेड नोट्स मिल जाई छि ताकू टिके पढी दिए only reading will not serve your purpose. That is something I'm really like I'm sure about. आपन कहिया ही पढिबो या तो मिरर आगे कोंतु मॉक दियंतु फ्रेंड्स रो सर्कल कर दियंतु दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट मैम बहुत इफेक्टिव इनसोटा थाए आपण माने एठी मु देखछु 19 जण अछंती 17 18 जण अछंती यू कैन कोलैबोरेट विथ ईच अदर कि हां हमें 5 जण आजिबा 4 जण बसजंतु मु इंटरव्यू दे दोची कोइ सबुटु इंपोर्टेंट थाए सबुटु हमर जो इनोवेशन ता थाए हमर निज फ्रेंड्स को आगे कहिया कोइ सेठी आउरी जजमेंट आउट के बेसी हो जाए कि हां आपको एटा तो बेसिक दिनसोटा ही जणा नै से पई जदि हमर फ्रेंड्स अगर कहि दोचनी ना ताले आई एम प्रीटी श्योर यू कैन परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ एनी बोर्ड कोइ सबुटु से जजमेंट रो जो डरटा थाए फ्रेंड्स भीतर ही थाए से भाई मु माने तुमको रेकमेंड करबी आपन को कि 5 जण ग्रुप करिकी प्रिपेयर भी कर परिबे और एंती मॉक इंटरव्यूज भी कर परिबे मु मोर मन अछि मोर फॉरेस्ट इंटरव्यू जेतले थइतला वी हैड 4-5 ऑफ आवर फ्रेंड्स आमे सेमती मॉक करथलु कि 4-5 जण वीडियो कॉल आसीला 4 जण किछ किछ क्वेश्चन पचरी मु किछ आंसर करबी हेला एमती मॉक्स हेला मॉक्स का माने इट डजंट ओनली मीन कि मॉक मध्ये दवारे जति कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रे एनरोल करिकी सेठी जाई की करियर अछि that is not a compulsion as such एमती टाइप रो भी आपण कर परिबे another thing मते खाली कहर अछि आई एम नॉट श्योर कि ओपीसी रे हमको जेमती यूपीएससी रे कोनथला कि ट्रांसक्रिप्ट नथला एठी हमको ट्रांसक्रिप्ट एबे किछि आसु ना जदी मिली परुची तले ट्रांसक्रिप्ट्स को टिके देखले हेल्प हुए इन माय ओपिनियन कमेंट आउ सेटा को भी देखिया रोटे टेक्निक एमते था कि जदी तोर डैफ रो किछि ओवरलैप करूची कीवर्ड्स ताले से कीवर्ड्स रे कोन कोन टाइप ऑफ क्वेश्चन से माने पचारे हेची पूर्वरु ताकू जदी टिके प्रिपेयर कर दो ताले दैट आल्सो हेल्प्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट okay so we'll take up a few questions, and after that Sarabjit, if you can after a few questions you can also tell them about your own UPSC interview experience. Okay, so पिलाने तो एबे चाहिए किछि क्वेश्चन पचारि परियो सर्वजित को, तो please ask whatever questions you have and he will be happy to take them. Yes, anyone? Nuri, Satyajit, Bandita, Sir. Rakesh. Yes. Hello, sir. Yes. Yeah, Yes. Nuri here. Hello, Nuri. Hello, Nuri. Yes, sir. Sir, my question is a follow-up question to whatever you just said in the introduction, brief past. So you said that the conversational mode should happen with the board. Like when we are talking to the board, it has to be conversational. But sir, I think that like I'm just trying to understand. I think that to initiate a conversation, there has to be a loose sentence at the end of the question asked. That's the reason, like that's how the conversation continues. If we are direct to the point, like whatever they ask, we stick to concise and crisp words, how that would feel like a conversation. That's something that I was thinking. Okay. It doesn't
necessarily requires you to say something loose sentence in order to make it conversation. देखो आपनको body language will tell a lot than what you actually say. ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କାମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମେକାନିକାଲି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି. when I say conversation, I mean to say କି ଆପଣ ମେକାନିକାଲ ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା, ଯେମିତି ମତେ ପଚାରିଲା let's say if I recall it properly, ପଚାରିଥିଲା କି ମୋର ହବି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି I mean ଓଡିଆ cuisine enthusiast ଏମିତିଆ ଥିଲା. ତାହେଲେ ସିଏ ଏମିତି ହସି କହିଲେ କି ଓଡିଆ cuisine enthusiast ଏମିତି ତ यूजुअली सुननी ये कैसा हॉबी है ऐसा टाइप. दिस वाज द काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं था बट इट वाज अ रिएक्शन. सो आई when कहली कि नहीं सर, I think sir, not think sir, there was a story actually, incident which actually inspired me to take up this hobby. So while I was there in my college, so we had my friends were from different states, and they always used to discuss our cuisine is good, and our mess usually had Rajasthani cuisine, South Indian cuisine, but nobody exactly knew about Odia cuisine. And that is how I felt ki, they should actually know about it. And then I used to bring some of the desserts when I go home, chenapod or something like that, and they used to cherish. And that is how I felt that this is a good thing, and I love cooking, I can make them aware about it. So empty a story କହିଦେଲି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଥିରେ ପଶିଗଲେ. And so that is how conversation, ତମ ନିଜର କିଛି personal experience ରୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେଲ. So that is how basically conversation start ହୁଏ. ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ conversation କରିବାର ଏମିତି ନୁହଁ କି conversation କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ତାକୁ ଭାବୁଛି କି ମତେ conversation କରିବାର ଅଛି. ଯଦି ଆପଣ କାମ ଅଛନ୍ତି, composed ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପେ ଆପେ flow ରେ ବାହାରିବ. Exactly, that's the point to note ki if your interview goes smoothly in a flow, then you, even after the interview you will also know that my interview has gone well and you will actually get a good answer. But jodi kichi jerk type ro hochi interview majire kichi oda jarring kind of jinso hochi, abruptly bahut sara questions change hochi and you feel that you are not in control of the narrative, then even you will not feel good and you will also not get good marks. So the trick in the point is ki ebe to pacharibe to etre ame kon karibu, what should we do? The trick is to give short and crisp answers. That is for sure. You don't have to give very lengthy answers, but your answers should also be a little bit in the flow and you should also make them feel comfortable. And you should more importantly, you should tell them things through which they can continue. Okay, एमितिया किसी कथा कहबनी जहा द्वारा सडनली से स्टॉप हो जियो गोटे पॉइंट. फॉर एग्जांपल, suppose they are asking you ki to tell you something about your background or something, okay, बहुत पर्सनल डिटेल नहले किछ ओटा पचारछन, तुम यदि बहुत ही abruptly गोटे जिंस एंड कर दला, sorry sir, my personal background is not that good, so they will also feel ki how to progress beyond that. So they have to change. Exactly. They have to switch to some other thing. So you should not say something like that. It should be conversational. You can say a few words, few sentences, so that if they want they can go in that direction, or if they want they can also change. Okay, give them that option. गोटे मोर एबे मन पड़छि, नॉर्मली इंटरव्यूअर्स को मेंटालिटी ए था कि दे हैव अ क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क. यस, ता पाई गोटे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन ता से पचारले. That is also something I had told you ki if they are asking a question, they have the exact answer in their mind and they will be looking for that exact answer, some keywords. Exactly. If you are giving them their exact answer, they will be satisfied. If not, if they are beating around the bush, they will not be satisfied. Exactly. से मैं सेटा टिके टिके आपनको भाबे पड़ो कि हां ये क्वेश्चन ता जो पचारछंती काहे पचारछंती सेटा टिके से इंटेंशंस को पिक अप करया पड़ियो. Okay, any other question? Hello sir, good evening. Hello Satyajit. Good evening. So I want to know that if I asked a question, the interviewer asked me a question about what are the something points, I will tell the reasons that this is the reasons. Should I substantiate it with examples? As I think I will get some very less time to give the answer. No, you don't have to give examples immediately. I think you just give them a very short answer. If they ask you, then you can give them example. Because firstly, you do not have a lot of time. Firstly, कोई भी question रो, I don't think 1 minute रो बेसी answer तो अपन कही परिबनी. Okay, very short. हाँ, attention span इते थाई ना. सिर्फ if you have let's say 4-5 points in your head, prioritize की हाँ अभी तो सबटू important और impactful points उड़ा कौन अछि, सेगुड़ा को आगे कहियार अछि.
and see जदि तांकु जदि से कीवर्ड टा मिली वाला से इनिशियल 2-3 रे से उठ अटके देबे से जो क्वेश्चन पचारे फर्दर क्वेश्चन will हां go से upward. पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो से भाई एमती नुहो कि इट इज नॉट मेंस कि हम मोते नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ियार अछि से भाई सबुटु मुंडरे प्रायोरिटाइज करिवो हां सबुटु इंपोर्टेंट को दी तीनटा अछंती आ यूजुअली एमती थाए कि सेही पॉइंट्स गुडा टिके कहबो जोते टिके जदी फीलिंग्स जो पॉइंट्स से टिके जनरेट ही परियो ना सेही पॉइंट्स गुडा को अपन जदी कहबे ताले टिके बेटर थाए mechanically answer मेकानिकल गुडा थाए ना हां so Thank you, the sir. point is कि माने एग्जांपल मु दोछु जदी आपण भाबियंतु चाइल्ड लेबर ऊपर एक क्वेश्चन आइला हम्म। तल जल तमे एमती कहिला उतरे तमे कहयो कि छोटे तमर इंसिडेंट विषय कहिला कि सर मु एठी लेट्स से कोटे ढाबारे खाउतली हम सेठी मोटे चाइल्ड लेबर देखिया मिला जल से एमती कहले कि डू यू थिंक चाइल्ड लेबर स्टिल एक्जिस्ट इन जनरल कि छोटे कहले तल जल तमे आपण एमती कि छोटे कहउजो ताले सी रिलेट करिवा नै ये पिला एक्चुअली बहुत ऑब्जर्व करे और एमती observant but still you cannot afford to lengthen your answer. You have to definitely make it crisp that goes without saying because their attention span is less. Okay, in fact if you put yourself in their shoes also you will also get irritated. You ask someone one simple question ki do you think India still is facing the problem of child labor, and they are giving you answer in a mains answer format ki 0.1 0.2 0.3 then scheme or naam, so you will get irritated. You just ask a very simple question. It should flow smoothly like a conversation. So that is the whole point. You should give them crisp answers, but that should be also enough for them to pursue towards that line if they intend to, but it should not be too lengthy that will also bore them. Okay, it's a delicate balance that you have to make. Sir, can you please answer this question? Do you think India still have child labor in 1 minute Yeah, something? Of course it has. It's a lived reality. We see it every day. How can we deny it? Of course there is. Sir, I am asking the way you will answer in the interview round, just to know. Right, so I'll say yes, sir. From my own lived experience, as well as some statistics also, I'm sure that India is still facing child labor, although the magnitude is less than what it used to be before. And in fact, I have also seen in my life, in some roadside dhabas also, I have seen that there is still the plague of child labor, sir. So then if they want, they can pursue. Then they can say, okay, where did you see this thing? Yes. Okay, where did you see? And what kind of report do you have? जदि तुम माइंड से रिपोर्ट नाही ताले ए रिपोर्ट पाटरी पॉसिबल जदि तुम जानि छ किछि रिपोर्ट आईएलओ रो रिपोर्ट अछि देन यू से इट अदरवाइज यू डोंट से दिस पॉइंट यू जस्ट से कि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट देयर इज दिस इशू आउ नेवर एवर देखो नॉर्मली हमर मेन स्वयं जे थाए कि पॉइंट्स हमें जनरेट करिया पे भाबू जदि आपण को क्वेश्चन दीटा ही पॉइंट्स याद होछि फ्रेम योर आंसर सच दैट सी दीटा क्वेश्चन भी कंप्लीट लागिवो कमे तांक पर एमति नो कि ना चारटा ही पॉइंट आसिया कथा दे आर लाइक दे विल बी सैटिस्फाइड जदि दीटा ही तमे ठीक से कहिला भल से कहिला ओडे एंड कथाटा ओडे एंड वाला लागिला जदि एमिति कहउछो नो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई हैव सीन child labor, so the ILO report says that this much is the child labor in India, and India is taking this much steps. Okay, and the third one is got stuck. So you got stuck, right? So उनको लगा कि there was a third point and he's trying to recall it and he's not able to. So the impression बहुत खराब रहेला. So सेटा टिके स्मार्ट खेलियो आपण कि दीटा पॉइंट जदी आछी मुंडे मु भाब देली पॉज रे भाब देली कि हां दीटा पॉइंट आछी सेटा ही कहिबी से दीदी रहबी. Okay, any other questions? Yes सर जदी सर जो कीवर्ड से जानिया पे चाहउछंती जदी मु सेटा धरि न पारली तापर से सिचुएशन को केमती टैकल करिवि ऑन द स्पॉट ना मते जति के आसुतबो सेति के कहबी तांको फॉलो अप क्वेश्चन. yes से इट डजंट मैटर देखो सी हे तांक पकरे बहुत गुडा क्वेश्चंस थबो सी टिके इनिशिएट करे में चाहंती जदी जेमती मो इंटरव्यू बेले मते पजातले कि नेशनल पॉलिसी ऑन माइक्रो इरिगेशन कोन मोर एग्रीकल्चर भी माइक्रो कल्टीवेशन थिला दैट इज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर से क्वेश्चन टाइस हेतला माइक्रो इरिगेशन क्वेश्चन टा मु जेटा भल से आंसर कहि पेलिंग जोडा कि ताको दरकार थिला सो ही चेंज द टॉपिक इटसेल्फ से पई तापे वरी होबनी कि मु धर पाइलिनी से यदि नेक्स्ट क्वेश्चन टा आसी परनी सी दे विल आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन. The point to note here is कि you should try to be as exact as possible, but in case you are still not able to be very exact, बहुत specific answer भी दे पारना,
जेनेरिक आंसर दबो दे बहुत सेटा भी इवन लेस देन स्पेसिफिक कहयो बहुत crisply जिनसडो सारी दो. Okay, so that they will also know कि you don't know too much, so then they will change the track, they will ask you something else. The point is कि if you beat around the bush and you are giving them some very generic thing, is no, this is an important thing, this is माने generic adjective kind of things, हाँ. they will get irritated. See, You are points, wasting their जदि time. गोटे point कहूचो, it should have some substance. Yes. एमती नो कि sir, this is a very important thing for India looking at the current perspective. एटी पांच छटा word मु कहली तार किछि meaning बोलनी. You are not making any point. So yeah, so each and every word that you speak should convey something, should have certain kind of substance. एमती नो कि खाली English ही कहूची नले खाली ओडिया मु कहूची तार किछि meaning भावनी. सेमती हवा कथा न. Okay, sir. Thank you. Sir, आगोटे question थला. हाँ. If involuntarily I am doing some hand gestures, Hmm. so is it completely a no-no, or if ना पूरा ठीक. अच्छा इतरे just 1 minute I will say, then Sarabjit you can give your impression. I had told you this thing guys कि do not ever take these mock interview videos that you find on YouTube seriously. If you see some of the mock interviews कहे कि हाथ तो पूरा straight पूरा चंगो पर रखियो, okay, totally हॉलीवुड ये जी पूरा robot ही जो. You put yourself in the shoes of others. तो मैं यदि देखिए ଗୋଟେ interview ପାଇଁ ପିଲାଟେ ଆସିଛି ପୁରା rigid ହେଇକି ଏମିତି ବସି ଟିକେ ବି ହଲୁନି, will you like it? You will understand कि this person is either under too much pressure or maybe he has been brainwashed by some coaching institute कि this is how he should behave. Behave like a normal person. Only thing is do not take it into the extreme. एमती नहीं कथा को बहुत हाथ एपट सेपट होतो. Normally एमती होगा कथा होगा हला. This is just a rule of thumb. There is no absolute rule or anything. But the point is तुम यदि बहुत unnaturally निजे को plastic और rigid कर लो, then they will also not like it. Okay. The interviewers do not at all care about what is out there in the YouTube videos. What they care about is whether the person in front of them is genuine or not. In fact, you should always have some kind of small hand gestures that would complement what you are saying. Because when what you are saying and what your how the hands are moving, if they are in sync, then that shows that you have conviction. Very important point, do remember this. When you have conviction, your body language will be in sync with what you are saying, and that will put a very forceful image. Right now you could see that I believe in what I'm saying. If I instead put it like this, okay, both rigid hi kabhi, no, you should say what you believe in, it will not be as impactful, because you will realize that the body language is not that confident. That means ki maybe more city conviction nahi jeti ki mu kahuchi verbally. Okay, Exactly. so hand gesture is normal. You can do. Just to add it or summarize rather, I would say कि you have to behave normally. Okay, कुछ एमती नुह कि मु किछि गोटे instruction दिए जाऊ मु सेमतिया टाइप behave करिया में चाहूची. अपन जेमते normal थांती, बस you have to keep in mind that you are in a formal space. कि बहुत informal ही जाऊ ना, सेति रो खाली ध्यान रखे अछि. बाकी just think कि मु निजर गोटे elderly टीचर आगे छिड़ा हेती माने बसची आ तांको से तो मु इंटरैक्ट करची. सेमतिया भाबी कि गोटे फॉर्मल सेटअप रे मु अछि. बाकी नॉर्मल हैंड जेस्चर्स आर ऑलवेज वेलकम इन माय ओपिनियन. कि पूरा एमिति जदी बस दे जंदी तो इट लुक्स वेरी ऑड. कि एमति कोन हाथ नॉर्मली वी डोंट सी इट लाइक दैट. हैविंग सेड दैट जदी फॉर्मल मु कहली किछि लोक कोन जानती कि पछुक एमति ही जानती. That is also not good in my opinion. You have to be like little bit attentive. जेंति एमति टिक्के एमति छिड़ाबे टिक्के जदी आगु just a little bit bend जदी होबो तले लागि उटे हम टिके attentive अछो. हां कोन छि कहउछन जदी हमरो ताकू नॉर्मली जदी बहुत एमति रिलैक्स ही बसछन तले सेटा टिके लागि कि कैजुअल टिके है. ओके, बैठने का तरीका. हेलो सर आर्म रेस्ट यूज करेगा कथा चेयर या arm rest I think you can, but again मतलब थोड़ा अगर कैजुअल आर्म रेस्ट में क्या होता है, you can be little casual at times. यदि भूली जीव ना तले हाथ एपट सोडे एमती किछि भी हे पारे. राइट. से पई टिके ताकू कोंती अवॉइड करिया पई कि जदी आपण नॉर्मली एमती रख परछुंदी फॉरवर्ड हे गेले भी किछि ठीक है. फॉरवर्ड जदी कोंती सेंति पे आर्म रेस्ट दरकार पड़े ना. हां एमती एमती कथा हले किछि दिक्कत नै. आर्म रेस्ट यूजुअली प्रॉब्लम के जतले हमें कन्वर्सेशन में बेसी फस जो
तापरे ପଛକୁ पछकु पळेवा टिके हाथ याडू को आसीला हाथर मूवमेंट किछ हे पारे से नॉर्मली मु पर्सनली एमति करछन टिके स्ट्रेट बसिबी टिके बेंट फॉरवर्ड जस्ट टू शो दैट जे भी क्वेश्चन किछ पचले तांको आडू देखली आउ तांको कथा कहली आउ नॉर्मली मॉक इंटरव्यू एमति कहली कि जदी के क्वेश्चन पचर जंदी यू हैव टू लुक एट एवरीवन दैट in my opinion is not at all a good thing आपन लोने क्वेश्चन पचर जंदी 90% of the time आपण तांकु ही देखो तांकु ही कन्विंस कर तांकु ही तो जदी तमे आई कांटेक्ट कहा से तो करछो ताल दैट शोज योर कन्विक्शन ताल जदी तमे एमती समत कार्ड देखि कहूचो ताले तांकु डी अजीब लागियो कि क्वेश्चन हेलीकॉप्टर वाले पूरा कुहाई छी से तमे आंकु भी देखछो एमती देखछो कोई नॉर्मली यूपीएससी रा इंटरव्यू जदी कहबी एठी जदी जने बसछन आउ जने एपोर्ट साइड बसछन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये तमे आंको से कथा होचो ताबरे मझरे एठी भी कहि कि जे डजंट लुक गुड से जदी लेट्स से कोटे बोर्ड मेंबर पछचनी तांकर लेफ्ट राइट साइड जदी अछि तांको से तमे टिके इंक्लूड कर परिबो किंतु पूरा बोर्ड को जदी इंक्लूड करे में चेष्टा करियो ताले से बहुत पुनी अगेन मैकेनिकल देखाबो अननेचुरल देखाबो से यू हैव टू बी जस्ट रिलैक्स नेचुरल और फॉर्मल टिके रहयार अछि ओके I think कि 2-3टा जो यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट रो सब वायरल वीडियोस इंटरव्यू रो हुए जो सेंसेशनल क्वेश्चन पचारंदी ता रील्स देखि पिलांका भीतर गोटे बहुत ही रॉन्ग आइडिया गोटे जनरेट ही हाउ टू बिहेव इन एक्चुअल इंटरव्यू सो प्लीज I mean dislike those videos okay and remove them from your timeline YouTube timeline they are just a complete waste of time and those mock interviewer that you see on YouTube they will also never ever be asked to take an official interview at UPSC or state PCS okay in fact these UPSC interviewers or OPSC interviewers I know for sure they would hate these people exactly. Who are spreading this kind of misconception of how the interview should be the interview is not an interrogation okay so ei bhaliya adi video epan dekhucho no matter ki se pila mane clear karisanti ki nai please do not watch these kind of interviews okay सर एक्चुअली प्रॉब्लम होची इंटरव्यू माने मु देखुनी बापा देखुचंती माँ देखुचंती भाई देखुचंती से डेली मु खाई बसिले तमे तो एनफोर्स करछते आज हम एटा देखिलु तो एमटी बसिबु एमटी चालिबु माने निजे न देखिले से माने आसी ही जाउची सर सर ये तमरो किछ it is the same story in every household मोर भी बापा सबले देखंती मोत कोंती तो नॉर्मली मोर तो आउट भी वैसी नॉट जस्ट इंटरव्यू पूरा प्रिपरेशन टाइम रे भी यूजुअली बाबा कहती कि हां एमती घंटा पढा सेमती पढा some go टॉपर कोड कहिथो so I think you are the person who needs to read and you have gone through this journey okay so I don't think you would require a lot of instructions from others obviously you have to take their information जो भी वो बोल रहे हैं but you should not be disrespectful but सबकी सुनो लेकिन आप खुद की ही करो so that is the mantra you need to follow over here वो भी आपके अच्छे के लिए ही सोच के आपको बोल रहे हैं तो but you know what is right what is wrong right तो टेंशन नहीं लेने का खुद you do what you feel is correct right thank you sir welcome okay anyone else any other questions Hello, sir. Sir, am I audible? Yes. Please go ahead. Sir, sometimes we just forgot some basic questions. जोड़ा बहुत basic थिबो किंतु इंटरव्यू रे बहुत माने पड़े नहीं. For example, article कौन है कि fundamental rights article कौन. So how to tackle that question? For what should be the right way to answer those kind of questions if you don't know actually at that moment? Okay, should I take this question? Firstly, you have to ensure that through revisions that these basic questions you should be able to answer. Okay, that is expected out of it. Okay, having said that, अगर आप वहाँ पे उस time पे because of any reason you are not able to recall, जो रामबाण solution है, that is, sir, sorry sir, I have read about it, but right now I cannot recall it. Right now I cannot recall. Don't say I have forgotten. Right now I cannot recall. I have read it right now. It is back in my head. I cannot recall and have a little smile. They would understand कि भाई
ये थोड़ा Pressure situation. प्रेशर में अभी हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, and they will understand it, they will ask some other question. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा in your marks, because it is a normal human behavior. It's such an important day for you, you ought to be little bit under pressure. तो वो होता है, तो सॉरी बोल के कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, I will go and read about it again, but हो गया, उससे ही काम खत्म है. I just want to tell you one interesting anecdote on this. One of my batchmates in OS, okay, he's in a very good position right now. So he was sharing his own interview experience. से कौन कहला कि तारो first interview just पसु first तीनिटा question जहाँ पचाले, he said the answer to them, all of them, he said कि sorry sir I don't know, sorry sir I don't know, sorry sir I don't know. Now imagine after saying 3 sorry I don't know, what will be the mental condition of the person? So he knew that perhaps I have put a very bad impression on the interviewers, but the point is it did not make any impact on the interview, because the point is the subsequent things that they asked he could somehow manage, he could collect himself and he could answer very well. हो सकता है interviewers also understand that it's very natural that you would not be able to answer a few questions. The point is you should not bluff, okay? And when you try to take them to your comfort area, when they are in your comfort area, मतलब जो loose ball है उस पे छक्का मारना है, okay? So there you give them your best answer, and that will show them that okay, you have competence in some areas. Like I said, the interviewers are not looking for your worst qualities, they are looking for your best qualities. The point is you yourself are scared कि they are picking up on my worst qualities, है ना? Okay. Another just to interrupt little कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ओके, and most of these questions are factual questions, okay? Juda article, let's say one question, these are factual questions, and factual questions most of the interviewers use it just to initiate उसका आंसर, या तो they want certain other question and ये preliminary question जैसा act करता है, but usually factual question से वो judge नहीं करते. Okay, that you need to keep in mind. They do not judge you on factual questions. Judge you on your opinion, yeah, the way you suggest so things. normally make sure कि अगर आपको कोई opinion वाला question पूछा जा रहा है, there you cannot afford to say कि sir ये तो मेरे को नहीं चमक रहा, sorry sir I cannot understand, or because opinion question में आपको दिमाग लगाना है, तो just make sure कि opinion वाले questions में you give a good answer. क्योंकि वहीं पे I think that is, these are the questions where you can get those sixes. That one is the personality test. So in which questions can you show your personality? If they ask you what is the capital of India, New Delhi is the capital of India. Is this showing your personality? Yeah. But if they ask you some kind of question in which you have to give your subjective experience, answer, opinion. If they say, do you think that civil service is still relevant in India? Now, whatever you are giving an answer, by the way, there is no correct answer to this question. Now it will show your personality trait. If you give some kind of negative answer, it shows that you are a sort of pessimistic person. They will not take you in. So point is, you will not be judged that you don't know any factual question. If they ask you what is the capital of this state, you don't know, it's okay. But you should not avoid any question in which they are looking for your own opinion, because that is where your personality will shine. Okay. तो वही ओपिनियन वाला क्वेश्चन, कोई अगर मतलब सिचुएशन दे रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इनमें आपको थोड़ा सोच के अच्छा आंसर्स देने की कोशिश करना है. फैक्चुअल क्वेश्चंस इफ एनीवे आपको याद नहीं आ रहा है, सॉरी बोल के निकल गए, डजंट मैटर. और एक और चीज होता है, अगर सॉरी बोलने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा और मैं सॉरी बोल रहा हूँ, तो उनको लगेगा ये दिमाग ही नहीं लगा रहा. तो you have to pretend as if कि हाँ, थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को नहीं चमका, फिर 5 सेकंड में फिर आप बोल रहे हो सॉरी. तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एंड हुआ, सॉरी सर आई कैन नॉट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. So you have to understand. See, the point is कि you are understanding everything from the perspective of the psychology of the interviewer. That is why one of the initial sessions that I took was on the understanding the psychology of the interviewer. Because I thought many times these young students, they don't understand, or they don't even consider how would we look from their perspective. Yes. So it's like you are in that sort of this going through the motion in which you are only projecting what you know. Okay. Rather you try to think what they want to know from you.
If you see from their perspective, you will know which is the correct answer to give in this scenario. That's the trick of the interview. If you understand that, you're going to get very good marks. So another doubt is whether to use the phrase, sir, can I take a guess, if you No, are no. vividly remembering something? Guess word use ही नहीं करना है. I think this question was asked to me earlier. Then you asked the same question, one of you asked the same question to Nitesh sir and Santosh sir. They also said, see, the point is guess the word. That word means that you don't know. So you are just giving random answer. They will be irritated. Yes. But if you have partial knowledge on this, you can simply say, sir, based on the partial knowledge, this is my answer. So even that is respected. Exactly. But if you say, sir, can I take a guess? They will be irritated. You put yourself in their shoes. तुम्हें जनक पचार क्वेश्चन कि बाबू तुम कहल ये जिनसर माने कौन और यहाँ कौन अच्छी कहीं आया मुझे गेस करी कहबी you will get irritated. Either you know it or you don't know it. Don't take any guess. But if the person says कि I have only read half things about it, so based on that this is my answer. So then even if that is wrong, you are like okay चलो मैंने इससे पढ़ी दिला maybe से ठीक से मने पड़े. But don't ever use the word guess. Okay. Similarly, don't even use words or phrases like to be honest. To be honest, exactly. Entire interview you have to be honest. So to be honest, honest so you have to be like mindful about these things. कोटी कौन phrase आप use करछंती. Another thing ये जो guess करियार है. First of all, ये guess वाला तो कभी भी use करनी because guessing itself shows कि तमें serious now. Okay. Second thing, more data template data use करते कि जब मुझे किसी आसुनी first the best one कि sorry कोई क्या आगु बढ़ा किसी load नवर नहीं आ रहा. Second था जब कोच जब हमें partial knowledge था factual जब अच्छी तादरे इतने मुंडा पसंद नहीं जब आसुनी मन पड़नी exact sorry कोई क्या आगु बढ़ा जब किसी छोटे let's say theory किसी छोटे पहुंचा चुनी किसी छोटे concept पहुंचा चुनी and let's say you have some partial knowledge. आगु disclaimer दी कि answer टा मु usually दिए कि हाँ sir right now whatever I can recall sir sir this is तल से बुझले कि हाँ ये recall करूची और इटा अधा ठीक अछि तल से बुझ परियो कि हाँ नले in my limited knowledge sir so you gave the disclaimer and then you told that particular thing तल से जानले कि हाँ जदी टिके भूलभाल भी अछि से छाड़ दो कि हाँ जे एमती आगु कहि जदी डायरेक्टली कहि दबो तल से भाबे कि ढाबा मारछि आ से पई मोर ए दी टेंशन था जदी फैक्चुअल दिन अछि ताल तो पॉसिबल ही नहीं कोई पूरा भूल ही कहबो ताले आउ जदी एमते किछि थियरी टाइप पचा दिचने ताले मु एमती कि लिमिटेड नॉलेज अछि नॉलेज सर व्हाटएवर आई कैन रिकॉल राइट नाउ सर दिस इज एमटी. Any other question? Hello sir. Hello. हाँ sir actually मोर graduation physics थिला मु totally physics को 3-4 वर्ष छाड़ी सारलाई अभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले मु दउची यदि फिजिक्स ओरिएंटेड बारंबार क्वेश्चन किछि पचारुचंती देन हाउ टू टैकल दिस यदि मन भी पड़ने टोटली फिजिक्स टेक्निकल बहुत ही जाउची दिस बोर्ड मेंबर के टेक्निकली बेसी बारंबार फिजिक्स पे फोकस करूचंती. Okay. माने एक्चुअली मोर तो ऑप्शनल आउ बैकग्राउंड सेम ही थिला से भाई आई डिडंट फेस दैट पर्टिकुलर इशू जदी आपण I'll take it up. See, if they see that physics is mentioned in your optional, okay, or graduation, and I'm giving a specific answer, but this applies to all of you. Suppose you have some technical subject or any subject on which you cannot give a satisfactory answer. Now try to understand what this means. The point is what kind of questions can they ask from this? जदि फिजिक्स रे तुमको क्वेश्चन पचारिबे तुमको कोन एचसी वर्मा रो गोटे प्रॉब्लम दी कहबे कि तुमे कुह ए पेंडुलम टा एम्ति स्विंग कले को मोमेंट रे कोडी पहुंचिबो. They will not ask you that question. What they are going to probably ask you application, right? The application first thing. Second thing is very basic things which you cannot ever forget. For example, you cannot forget that gravitational force is the thing that makes the earth go around. They will ask what is the value of g. So these are the things you cannot forget. So तुम तो ये सब बेसिक जिंस तो मन हेतिबा ना जदि एटा भी कहि न परला त माने कोन माने एक्चुअली तुम भलसे पाठ पढन तो तार तो किसी सॉल्यूशन नहीं. But the point is what they are going to ask you probably is the application part, something related to current affairs, let's say. Okay, maybe they will ask young man, we read in the newspapers that recently scientists are trying to find the holy grail of physics. That's something that combines
the Newtonian model of universe with the quantum model. So one single formula that would combine these two. So do you know anything about it? Is it possible that we will be able to find this single equation? Now, this is what they are going to ask you. You are not going, they are not going to ask you ki you give the formula of this and this, or you solve this problem. So in that sense, why worry? If you have actually read the subject, you will be able to answer the basic questions. And on, but the most important part is that they will not ask you very, very technical questions. Even if there is a physics professor in there, physics professor will not give you a physics problem. So why worry about it? जहाँ भी पढ़ी जो basic जिनिस तो मने अछि ना. Just to add, जो देखो एटा को भी इंटरव्यू माने इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव रो देखो ହେଲା सी फर्स्टली जदि आपण फिजिक्स बैकग्राउंड अछि सी यूजुअल क्वेश्चन थाए तार एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन सिविल सर्विसेस जदि आपण आछन तार यूज केमति करिवे सेम टाइप क्वेश्चन थाए. सेकेंडली यूजुअली से माने यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम इंटरव्यू रे ओटे फिजिक्स रो प्रोफेसर बसतो एल सी सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जोडा कि ओटे बाहर आउटसाइड व्यू अबाउट फिजिक्स एमते भावंतु कि मन से फिजिक्स लोक नुह किंतु जदि कहा मु कथार्थ जानली कि हां ये फिजिक्स ताले मु कोंटे लेट्स से मूवीटा देखछि ता धे कोन कोन होछ माने एमती बुझले कन्वर्सेशनल वे जे से पचारिबे बट एप्लीकेशन जरूर प्रिपेयर करंतु कि तारो डिफरेंट लेट्स से सिविल सर्विसेज रे केमती आपण यूज करिवे. सेकंड हला एमती कि बाहर जदि आपण पढिया रे किछि अछि फिजिक्स रा ताले एउडा पढन जोडा कि बाहर बाहर लोक कहबे जेमति कि न्यूटन रो लॉज गुड़ा को सेटा बहुत बेसिक जिंस गुड़ा थाए तीनटा लॉ विषय को सेमति जो बेसिक गुड़ा जोडा कि बाहर लोक को भी जाना थाए जेमति मु सिविल इंजीनियरिंग जदि कहिबी तले नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग बाहर लोक कोन सी कहि कि कोन कोन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आपण भलो हमरो कंट्री रे अछि सेटा कोंतु सेमति हमरो एटा ଗୋଟେ एग्जांपल जेन देती सेमति फिजिक्स रो किछि जोडा कि बाहर लोक जे कि फिजिक्स पढिनी से माने कोन पचारि परिबे आ तार ଗୋଟେ एक्सरसाइज करे कोन करिवे आपण सांग माने नले टीचर्स माने नले कि तांकू पचारिवे कि सर फिजिक्स रो विषय आपण किछोटे मते क्वेश्चन पचारंतु. Yes, from that you will get a lot of generic questions. Generic question ही पचारिवे. They will never ask कि ये moment of inertia एमती हला किछि हला न हला. They will not ask about that. So generic questions टिके prepare करो, application prepare करो. I think that would be enough. जदि आउ किछि आइला you can always use sorry wala thing. By the way, I didn't see the chat box. Noori, thank you very much. Noori has said ki happy Teachers Day to all of our mentors and everyone who made an impact in the lives of others for good. Thank you, Noori, so much for your very kind words. Okay, please, any other questions, please ask. Otherwise, we'll wind up soon. Sir, I hello, posted sir. a query. Yes, please ask. Who is this? Sir, I posted a query as well, like in the chat Okay. box. For every factual question that we cannot recall or have not read, can we say repeatedly, sorry sir, I do not have. I think I have answered this question. I gave you an example of one of my batchmates. He gave first three answers he gave that, sorry sir, I cannot recall. You can say it. Like real life experience ta mu kohibi. Like one of my friend is right now in forest service only. Star interview hitla. अदर रियल इंटरव्यू रे ताकू फर्स्ट क्वेश्चन माने वन ऑफ द मेंबर्स रा ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला कि तांकर कोन थिला कि तमिलनाडु रे ही हैड हिज कॉलेज राइट. ओके सो तमिलनाडु रो बेसिक टिके टिके प्रिपेयर करथले एम दिनो कि बहुत डेप्थ रे यूजुअली से निज होम स्टेट को ज्यादा डेप्थ रे प्रिपेयर करथि तले फर्स्ट वेले कि ये गोटे कम्युनिटी अछि से माने कोड प्रैक्टिस करछुंदी तमे ता विषय जानछ कि नै एंड ही टोल्ड दैट नो आई डोंट नो अबाउट इट. That was the first question. ता भीतर क्वेश्चन से कम्युनिटी ना कोन से ना कोन करंती माने से फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन टाइ ना कहिछि ता भीतर आउरी पछरछुंदी त ऑब्वियसली ताको आस्तो सी ना 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 कहि गला तथापि ही गॉट अराउंड आई थिंक 200 समथिंग इन द इंटरव्यू. सो इट डजंट मैटर जदि आपण गुड सीरीज रे जदि तीन चारटा आंसर न कइले किंतु जिंस लागी जब तमे सी कामनेस ता लूज कर देला डरी गेला घबरी गेला ता परथरु तापर ओटे नॉर्मल क्वेश्चन भी आसला तमे सेति बेले कहि परनो ताहाली से सेटा टिके जज कर देबे कि हां ये माने डरी जाई छै. See, 2 points. First of all is that this is a personality test, not a knowledge test. Your knowledge has been tested. So do not ever worry that you are not able to answer something based on your knowledge.
Second thing is ki you will only be judged on the basis of what you have answered. You will not be judged on the basis of what you have not answered. Okay, तुम्हें जहाँ आंसर दबो ता बेसिस रे तुमको जज कराबो. Answer do not know it sir, you will not be judged unless what you are saying do not know is very very basic which they expect from you. तो सेटा चलो बहुत basic, बहुत ही exceptionally basic हेले सेटा भी जाना नहीं ताले तुम पचराबो न्यूटन किए तुम्हें फिजिक्स रे पीजी करछो न्यूटन किए तुम्हें जानी ना, then you will get judged obviously. But usually I don't know, you will not be judged, but you are giving an answer, an imperfect answer also, you will still be judged, but the point is no answer no judgment. Okay, so why worry too much कि मु जदी न कहि पारली. Actually problem कोन पिला माने निजे ही नर्वस यार. हां सही तो मु कहि पारली कहि जदी पार खराब इंप्रेशन पड़े किछि खराब इंप्रेशन पड़े. Just relax. Okay, you just take them to your area of expertise conversation way रे जोथरे तमे बहुत भलो कहि परियो, and they are also looking for in which areas you have good knowledge in, or where you can they can see your personality traits. देखो इंटरव्यू अगेन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव रो भाबो कि दे want to have a conversation with you so that they will understand about your personality. से सीए सबले चाहिबे कि एमते विषय रे कथावार्ता हो जोता कि सी भी जानि छी माने इंटरव्यूई जो अछि सी भी जानि छी से भाई सीए केबे भी एमती चाहौ जंती कि तुमको गोटे क्वेश्चन कहबी जोटा कि से कहि परबो तांको कथा होवार ही अछि से भाई सीए एपर छोटे बुली वाली लास्ट को सेथरी गोटे मिनिमम रे आसीबे कि हां एथरे कथावार्ता हेइ परछु से भाई केबे भी डरियार नै कि हां एटा मते आसुनी. एबे देखो यार पैरेलल एमदिया भाबो कि सपोज देखो obviously तांकर knowledge and experience base is much more than you. Now you imagine someone who is below that gap from you. Imagine कि तमे गोटे प्राइमरी स्कूल को जाइछो कि छोटो छोटो पिलांक संगे तमे इंटरव्यू तो कहयानी कन्वर्सेशन करिया चाहछो. एबे तमे तांको डिफिकल्ट क्वेश्चन पचले दे विल बी ब्लैंक, so you cannot judge them. So you will rather ask them कि you will try to test them कि को एरिया रे पिलाडे किछि जानि. So ସେମାନେ जो subject रे किछि जानि now you can have a conversation, and from that you will judge कि okay this person's personality is like that, each child रो personality हला ए. So you will never ever try to judge them on things that they don't know. तुम्हें 5th standard रे जाई गोटे पिला को पचरे क्वांटम फिजिक्स विषय मते को, and on the basis of that will you judge that person? A kid doesn't know quantum physics. You will ask them कि do you love your mother, do you love your father, what is your impression of society around you? So these kind of very simple questions, and from that you will judge their personality. Same thing with you also. They will not ask you any question knowingly to embarrass you or to make you feel like you are inferior to them. They will just try to, through their question answer, they will try to judge whether you have those qualities or not that you will be selected for civil service. So it's just a basic understanding, guys. Nothing difficult at all. Just a basic understanding. If you understand what is the purpose of the interview, what they are looking for, then you will 50% of the work is already done. Thank you, sir. Got it. Very good. Anything else? Sir, namaskar. Sir. Yes, D. Hello, sir. B. Rani. Yes, sir. B. Rani, please Sir, go ahead. B. I think Rani you. here. Yes, please go ahead. Happy Teachers Day, sir. First of all, Thank you. sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Sir, मोर बहुत limited friends अच्छंती. मोर botany optional, sir. Technically, तो general questions कौन आसीबो, sir? टिके कहि परिबे ना, sir? Botany. I think you should ask. Okay, if you don't have any such friends, ask your Yes, sir. seniors or even maybe some teachers of yours. You ask them who are not even botany teachers. You ask some normal teachers who are teaching normal others teaching other subjects. When they hear about botany, what are the things that come into their mind, and you prepare yourself according to it. And apart from that, you also prepare some of the basics of botany. Basically NCERT रहले पढ़ी दियो किछि 11th 12th रो बही पढ़ी दियो. Question जहाँ आसियो सेतरो आसियो बहुत specific botany जिनसर आसियो. They will not ask you कि you tell me कि एई गोटे बहुत ही obscure गोटे random plant रो scientific name कोन. They will not ask you. They will ask you कि plant kingdom और कोन अछि तांकर classification. से classification विषय किछि को कि ए classification करतले very basic things. And point is कि तारो application. कि being a botanist, how do you think you can contribute to civil service? Okay. यार कौन application तुम करियो botany रे? Maybe if you are, then you can maybe you think of a good answer to that. कि मु botanist है कि मु civil service रे कौन better करि पारि, right? कौन केमिति use करि? Normally जति मोर मुंडरे बे आसु जति botany हेला related to plants तले आपण afforestation को आस परिबो, CO2 climate change विषय आस परिबो. तले
I think Nouri just posted this question ki impact of climate change on plants, why Exactly, plant diversity is important. Very nice question. These kind of generic questions. Generic e direction hi pare jai paribo na nije nahi paribo. Okay, Please Sanju, mute yourself. Who is Sanju? Please mute yourself. If you are asking a question, then it's fine. Otherwise, okay. I think someone else was asking some question. Yes, sir. Previous year, they asked me about my particular district, that why Sambalpur city is very developed and the rural part of Sambalpur district is not developed. But I could not answer properly that question. So what could be that answer, sir? Who is this, by the way? Can you introduce yourself? Sir, my name is Dolly Nag. Achha, no, I saw your username, but I thought maybe it's okay. That's a real name. Very nice. It's a very unique name. Why I'm asking you is that it's a unique name, so you should also be prepared for on your name. Okay. First question will be on your name. Want to take it up? Thank you, sir. See, Sambalpur. First of duja things. First katha hala ki even I don't know the actual answer because I'm not from Sambalpur. So better you ask this question to someone who is well versed from Sambalpur. But the second point is, why do you think that the question that they asked you in the last time, they will also repeat in this time also? But in any case, it's better to be prepared. Okay. If coming from, it's not even about Sambalpur. I'm saying this to each and every one of you. Whatever is your district, you have to read everything on it. Every basic things you should know. Physiography, climate, vegetation, history, geography, culture, economics, everything. See, for that reason, he also said the same thing. DAF preparation. I had also taken a session on DAF preparation. Your basic is the DAF. Each and every word mentioned on your DAF, you have to make a note. Gote notebook re, gote page re, gote point upre research karke likhiyo. So if you have done it, then you would also know about this thing, because under Sambalpur's economy, you would know that regional disparity within Sambalpur. Some areas will be developed, some others would not be developed. Maybe in some certain areas there is an industrial belt. In certain areas there is some fertile areas due to rivers, so that side would be developed. Other area may be deserted, or there would be no investment. There would be lack of natural resources, forested area. So it's related to your district, so you should know it better. Yeah. I'm from Mayurbhanj. You are from which? I'm from Kendrapada. So Kendrapada. basically, use technology. ChatGPT use karo. Sedi lekho answers kichh mil jibo and make a good answer out of it. Okay. One more question related to this question only, sir. If they ask some political question like what is your opinion regarding separate state demand? In that case, what will be our point? No, this is not a political question. Normal question. Okay, this is a normal question. It is a political question. Is ki, do you support Narendra Modi or Rahul Gandhi? They will not ask this kind of question. Polity question they will ask. Indian polity question. It is federalism or regionalism kind of question. Okay. Yes. So you have to थोड़े कुछ positive points देना है, कुछ negative points देना है, and take a stand. It is very much important that you take a stand. Yes. Since you belong to Sambalpur area, so you can have the other way as well. But again, you have to. वो थोड़ा tricky हो जाता है लेकिन. See, I'll tell you very safe answer in this. This is also something that you would understand if you read the chapter regionalism in Indian society. The point is key. If you see what are the characteristics that they are looking for civil servants. Second thing, one of the characteristics, at least in UPSC, is that the person should bring in social cohesion. Okay, so you are supposed to be a leader who brings together people, not someone who divides people. Okay. But the second point is, obviously there is, due to regional disparity, there is a strong demand among the people for division. Okay, so there should be separate region and all. But until and unless this region is actually recognized as a separate state, and I'm not saying that that is inevitable, maybe it is not inevitable, but until and unless that happens, it is better that you take an opinion, take a stand, which is to bring together people rather than divide. If suppose, I'm not saying it will happen, suppose MDA division but then tome set out a, let's say even set out different state coastal state coastal state PCS interview coastal state to praise kariyo. But when you are giving interview for Odisha PCS, you have to
take a stand which will keep the state together. Here you cannot take an extremist view. I told you one thing clearly, guys. Your own opinion does not matter here. What you have to understand is what kind of an answer they are looking for. Probably the people who are going to ask you these questions, they will also not be in favor of such kind of things. So you will say, ki, sir, I think that it is better. See, what is the actual solution to this? The demand actually came because of regional disparity. So you'll say, sir, we will sort their demand. We will develop their part so that this, separation demand is not there. So, हमें सही लोगों को भी satisfy करिया, and we will also not let our state be divided. देखो मोर एक्चुअली मु क्वेश्चन टा प्रिपेयर करथिली मोर जति के मन पड़छि नॉर्मली मु एमति किसी ओटे देली या तो पॉजिटिव नेगेटिव को कि सेउडा को छाडी दबो दे डायरेक्टली मोर आंसर दे किसला कि डायरेक्टली माने मेन दिन पर आंसर करियो कि सर फर्स्टली ई डिमांड ही कहीं आछी राइट बिकॉज़ देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस आर देयर सेही लेवल ले हमर सेग्रीगेशन किछि ओटे होउची सेही लेवल रे डिस्पैरिटी होउची ताल तमे सॉल्यूशन ता कहि दो कि सर पॉलिटिकली जदि रिप्रेजेंटेशन एते होउनी ताल हमें लेट्स से माने टेक्नोलॉजी को यूज करी कि सेठी एबे हमें माने कोन तो कोन स्टेट लेजिस्लेचर सेटू माने कोन तो कोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हिसाब रे करियो नले हमर सेठी जदि जुडिशियरी हमें भाबुछु कि कटक रे अछि आ सेठी एक्सेसिबल ही पबनी ताले हमें सेट अप जुडिशियल सेफ्टी कर परिया जदि कल्चरली सेग्रीगेशन होची सर ताले हमें तांकू जो मेला फेला हमें करचू सेगुडा को हम यूज कर परिया नले सिनेमा को केमती हमें गीत सिनेमा लैंग्वेज ताको केमती हमें इंटीग्रेट कर परिया ऑन मेन स्ट्रीम रे ताले एमते आंसर जदि आपण सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहइबो ना दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर थिंक ऑफ rather than giving a very lopsided answer. एटा ई गोटे क्वेश्चन टा तुमको पूरा फुल पॉइंट्स दबारो केते अपॉर्चुनिटी देला सी भाबुतले कि एटा ट्रिकी कर देबी तांको फसे देबी किंतु तमे आर यूज करलो टू शो दैट यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुझिला कि नहीं तले ये हला दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस टू स्कोर गुड मार्क्स रादर देन तमे जदी एती भाबदो कि आद्रे मु कोन भाबिबी फस जीबी एटा कहले फस जीबी सेटा फस तमे ओटे माने कोन तो बोलदी इंक्लूसिव आंसर टा देलो कि हां ना हमें गोटे एका से तो रही परिबो अपन देखले कि टेक्नोलॉजी रो भी मु यूज कर परछि मु जो है कि एका से तो भी रहियार जो दउची आ मु सॉल्यूशन ओरिएंटेशन भी रखुची ताले बढ़िया रहइबो सो फ्रेम योर आंसर्स दैट वे you have to show them that you are not a problem focused person, you are a solution focused person. Exactly. So don't shy away from controversial questions. Take a stand, but that stand should be a very reasonable stand. And if you can answer difficult questions in a very good manner, then there is nothing better than that. You will get very good marks because from that only your personality will show. So मैं जिनसे को avoid कर दो controversial question को सीधा कहो sorry sir I don't want to give an answer to this. So that means कि तुम्हें सर्विस रे सिलेक्ट हला पर भी difficult situation को avoid कर दो. You will not confront. You will push some other person, unfortunate person कि भाई तुम्हें तो संभालो मुँह तो side है. So that is what it is showing. Okay. So do not shy away from controversial question. Give a reasoned answer. Okay, sir. Okay. Thank you. Yes. Sir, and what all questions you faced in your interview? Who are you asking this to? So both of you. ठीक मु कहूची so then most of the interview was based upon my DAF only. Okay, so then मु फास्ट कहली मोर हॉबी रे मु दीटा लिंक्स लिखती गोटे माइक्रो ग्रीन कल्टीवेशन लिखती आ गोटे ओडिया क्विजिन विषय लिखती so the interview started with कि माइक्रो ग्रीन कल्टीवेशन ये तो एटा को तमे घरे करि परिबो कि हां एग्जैक्टली आई कैन डू इट ओके सो दैट्स वेरी गुड थिंग तापर से कहले डू यू नो अबाउट बोनसाई yes sir bonsai I have idea about it sir it's actually a miniature version of big trees and it is usually a part of culture in Japanese in Japan and it has certain kind of aesthetic and cultural significance as well तले एमती करी मु आंसर टा कहथि सब सी कहले कि तापर सी पचले कि हां बोनसाई टा करिया सही कि गलत ओके इज इट अ गुड थिंग टू डू बोनसाई मु अगेन
क्वेश्चन एक्चुअली ठीक भलसे कॉम्प्रिहेंड कर पाइली कि कोन सही गलत को cruelty to the plants no हाँ एग्जैक्टली सेमती रे shorten करके रखे सिगे मु तो कहले हां सर मोर आंसर ता तापरे मु भूल आंसर ता दिली मु कहली कि सर इट इज ओके सर इन माय ओपिनियन इट इज ओके इफ वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर aesthetic purposes I don't feel there is any problem ताल तांको आंसर ता मिललानी सी कहले कि सीधा मते गोटे हिंट निज तरफ देले कि ना थिंक अबाउट द ग्रोथ पर्सपेक्टिव ना एंड किछ गोटे कहले ताल मु you are artificially हाँ. not letting the plant grow हाँ, so तो that's also a then cruelty. that is how I answered it कि हाँ सर if you look it from ethical perspective we are limiting the growth potential of a plant so because of that we can also relate it to let's say carbon sequestration कि बड़ा plant होता तो the amount of carbon sequestration it would have done so we're limiting it तब he was fairly okay convinced कि सी हाँ कि स्टोरी कोइला तापरे then he questioned about the population of our country because recently we are right now the most populous country and जो है demographic dividend हमें पहुंच जाए we have reached the stage and it is going to continue for 2 decades तले सिकली demographic dividend हम जो अच्छी population है तो बढ़ुची था कौन ठीक कथा कि भूल कथा then तारा आंसर टा मुझे एमती देइतली कि हां से जो नॉर्मल हमें जो कि डेमोग्राफिक डिजास्टर न होवा कथा डिविडेंड होवा कथा सो सेटरे कोन लाइक केमती क्वेश्चन टा फुली फ्लेम हैला देखो मु कहूची सेटरे आई टॉक्ड अबाउट स्किल डेवलपमेंट तो से सेठी अटकेले well tell me just one skill which need to be given to each and every person of this country and then तुम जो बोल रहे हो कि हाँ we will become by 2047 डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे तो वो एक स्किल बताओ हाँ so this was a tricky question I was like अरे भाई ये क्या हो गया so तो again आंसर में तुम क्या बोल रहे हो थोड़ा उस पे ध्यान रखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बट अगर कोई क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं इस क्वेश्चन पे यू कैन नॉट से सर आई एम सॉरी सर आई कैन नॉट थिंक ऑफ राइट नाउ यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ आंसर्स तो मैं फिर टू दिस आई थिंक आई गेव एन आंसर ऑल्दो आई वाज नॉट very happy with the answer I told sir entrepreneurial skill is something that we can teach to each and everybody so that every part of our every section of our society would be able to generate economic productivity out of them MSME भी मतलब जो है prosper करेगा and each and every basically individual will be able to basically भी job seeker से will be job creators तो इस तरीके का आंसर दिया तो वो मेकअप हो गया कुछ ना कुछ करके so that was the question and फिर I think another question was like since I had civil engineering background and civil engineering मेरा optional भी था तो I had a question कि right now we are making a lot of infrastructures so how do you see the future of the infrastructures in country तो again इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया था कि देखो सर अभी जो है हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बिकॉज वी आर आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग सो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू सपोर्ट आवर लाइफ्स लेकिन सर आगे जो है हाउ टू we need to take care of the sustainability of these infrastructures sustainability तो because a lot of our infrastructure जो हम लोग buildings bridges ये सब चीज बना रहे हैं बहुत सारा carbon footprint होता है so how can we reduce the carbon footprint green building का concept ये सब क्योंकि मैं ये सब prepare किया था so I was putting these words in my answers so that वो पूछ लें कि what is green building you see this is the point of DAF preparation that you are mentally prepared that whichever keyword they are picking up you have something to say about them and you can go up to one level second level third level at least okay so in depth also you can go so because he was smart enough so he had prepared for this and he was taking them along the areas in which he had expertise okay so this is a trick you have to understand कि जो एरिया रे तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं से कीवर्ड को उठेबार ही नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय बेसी किसी जानि ना हो तो से वर्ड उठेबो ही नहीं जदि तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी विषय एक्सपर्टीज अछि ताले तांको से वे रे नहीं जिवो से वर्ड जस्ट गोटे मेंशन कर दो गोटे आंसर एंड लीव इट they will automatically ask you question on it कमेंट टिके निज डैफ को टिके एनालाइज करियो कमाने मोर डैफ रे फूड अछि एग्रीकल्चर अछि सिविल इंजीनियरिंग अछि ताले डेफिनेटली एवडा सब हेले क्लाइमेट चेंज आडू को जीवन डेफिनेटली से पई मोर क्लाइमेट चेंज ऊपर क्वेश्चन ला कि डू यू फील इज क्लाइमेट चेंज अ होप्स एडा क्वेश्चन ला
and I remember the same question was asked in 10-15 days before किसी कोड पिला को OPSC transcript रे से हाँ, so से transcript के initial जो first week रे चालू छी ना initial तो जहाँ अछि सेमान तो किछ कर परिबेनी किंतु जहाँ next week रे अछि सेमाने टिके prepare कर परिबो कमाय ना usually तांको पाखे ଗୋଟେ limited question सी थाए से भाई गोटे देखो गोटे टॉपिक ऊपर केते भी डाइवर्स क्वेश्चन ही परियो बेसिक रु जाई परियो गोटे लाइन आउ किसी जाई परियो तो there is 1 2 3 4 let's say at max 4 level of questions that they can go on to 5th 6th level को तांकर निजर भी एते पेशेंस नथियो so you prepare accordingly at least second third layer पर्यंत prepare कर दियो कि गोटे क्वेश्चन मो ये आंसर देले सपोज नेक्स्ट तारो कीवर्ड एटा उठेबे तापरे नेक्स्ट एटा पचारिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एग्जैक्टली तापरे टिके करंट अफेयर्स कमन फुनी अगेन करंट अफेयर्स को भी अपन टिके डैप सहित कोरिलेट करिके पढिबे जेमनि मोर एग्रीकल्चर रिलेटेड थिला सेमे सेति ओले एमएसपी रो जो प्रोटेस्ट वाला चलथला तले सेटा उपचरितले कि कोन को प्रोटेस्ट को कोन डिमांड करचुंदी एमएसपी रहिया अछि कि नहीं तो दीस वर द क्वेश्चंस एंड सिंस आई न्यू कि हां ए क्वेश्चन आस परिबो तले प्रिपेयर करिके एतले से अनुसार आंसर मु बनिथली तापरे मु जमदी कहली कि गोटे तो माइक्रो इरिगेशन विषय क्वेश्चन पचारथिले कि व्हाट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन माइक्रो इरिगेशन अगेन सी एक्सपेक्ट करथिले कि मु टिके तारो डिलीवरेबल्स उडा को कहबी कोन ऑब्जेक्टिव थिला मु टिके ब्रॉडली कहथि कि हां सर वाटर एफिशिएंसी हमर ते कम अछि माइक्रो इरिगेशन जदी करिवो ताले बढ़े परियो अंती किंतु से डायरेक्टली चेंज करले हुनी ठीक है छाड़ा यदि एटा ही कहि पड़नी ताले आगु कहीं पचारियो फालतू देन सी भाबले कि ओडिसा रो सिंस आमेथलु से भाई सी जगन्नाथ कल्चर विषय कहले जगन्नाथ कल्चर विषय कहले कि कौन जानतो ता विषय टी को देन जदी एमते कि छोटे कहा विषय पचरछु हम जदी कहछु ताले किछ छोटे जदी कैचिंग वाला जिंस कहि देबो ना ताले तेनु टिके इम्प्रिंट रहि जो जेमति मु कोन कहली कि लॉर्ड जगन्नाथ जो छथि दिस इज द ओनली गॉड who himself comes out of his temple to meet every person in the world तले सी भाबछु कि हां भाई किस तोडे अलगडे नॉर्मल जदी कहयो कि हां ए सब छि खाय पे हुए प्रसाद सॉरी प्रसाद हुए एमती तले हे पारे टिके इंपैक्ट ही परिबोनी से मैं जदी कोड टिके तमे टिके इंपैक्टफुल हवा पे चेष्टा करियो तले दैट इज ऑलवेज गुड and by the way so sorry to interrupt sir please go ahead sir मोर भी मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग अछि yes आम ओपीएससी बोर्ड रे जनकर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अछि जन मेंबर हमरो तो मु टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करी से ऊपर ना बेसिक्स रे ही चलियो बहुत बेसिक सेमते पचारी बहुत बेसिक टेक्निकल नो बेसिक तमरो सिविल इंजीनियरिंग रे भी बेसिक पचारी आई डोंट नो जदी गुड मो पकर गोटे पीडीएफ टा जदी शेयर कर परिबो तले हां यू जस्ट गिव इट टू मी बहुत हेल्प होबो रेडी अपन पीडीएफ चीज शेयर कर श्योर विल शेयर ओके ठीक है मु सेटा कर देबी बेसिकली सेटा गोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट so I think if it's copyrighted material we'll just send it to him personally in the group exactly I guess बेसिक क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कोन कोन एया क्वेश्चन पछरे इंडिया रे कोन कोन नुवा नुवा सिविल इंजीनियरिंग मार्वल्स अछि ता विषय को तारे कोन टेक्नोलॉजी यूज हेची एत्ती की तो बेसिक जानिया पड़ियो कोन टेक्नोलॉजी यूज हेची नुवा नुवा कोन हेची तापरे की हमर सिविल इंजीनियर बेस्ट सिविल इंजीनियर ऑफ दिस कंट्री की अछंती एमएस तापरे येला बेसिक क्वेश्चंस तापरे भितरुवा क्वेश्चंस यूजुअली पचरिबेनी कि तोमर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोन पढिचो एवडा सब पचरिबेनी एप्लीकेशन जहार फिजिक्स अछि ताकू थोड़ ना एससी बर्मारू गोटे प्रॉब्लम पचारे फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करो एठी बट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे विल लुक इन यू कि तमे एक्चुअली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेते ऑनेस्टली करिचो ना जस्ट एग्जाम जेमते हमते पास है कि क्लियर कर देचो ये एग्जाम रो 2-3 दिन आगु पढी क्लियर कर देचो the difference will be known when you do not know the basic concept जानछो माने जदी छोटो मोटो स्पेसिफिक जिंस को ठीक से कहि पारनो इट इज फाइन जदी बेसिक्स ही तुम मने पडिन तमरा तामाने तुम सीरियसली पढिनो बिकॉज़ even now what basic things we have studied in standard 6 7 8 you should not forget because basics things are fundamentals are what we ingrain in ourselves so सही जिंस ही चेक करे डोंट थिंक कि बहुत बेसिक स्पेसिफिक ही जानते okay any other questions anyone who has not asked any questions so far jodi kichi pacharna aporyanto au kichi pachariya ku chahuncho please ask
Otherwise, we will wind it up Next soon. question. I'm Yes. Ritesh. Yeah. Go ahead. Sir, actually DAF रे मु मोर जो हॉबीज रे मु डैप सेशन आपन अटेंड कर नथली सॉरी मु जे फर्स्ट जॉइन करजे तो मु एटी पचार दोजे आज so the thing is ki I'm mentioning that I perform open mics as a stand-up comedian at open mic. So can I mention that? ମାନେ ସେଟା ମେନସନ କରିବ ନା ସେଥିରେ ମାନେ କାହିଁକିନା ସିରିୟସ୍ କନଭରସେସନ ଭିତରେ ସେ ଯଦି କହିବେ ଜୋକ୍ କରା ମୁଁ ସେଠି ପୁଣି ସେଟା ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା You can say it. See, what did I tell you? I told you that whatever hobby you are giving, it should show some kind of good quality in you. Open mic, stand up, whatever you are saying, this is also an artistic ability. This is also an intellectual ability that you are able to generate so many jokes out of it. You know, one of the signs of intelligence is sense of humor also. Right? So it is a good quality. Why? देखो सिविल सर्वेंट्स रे सबले सी गोटे वेल राउंडेड पर्सनालिटी देखନ୍ତି ताले एमती नो कि खाली इंटेलेक्चुअली खाली पाठ पढा ई सब ही करछि ताले सेटा एमती नो जदि तमे ओपन माइक करछो दैट शोज कि हां तमे टी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से and बहुत I'm sure that apart from you there would probably not be anyone else not who would have this thing, so it is an advantage for you. But point is, yes, you should think that what would be the next question. next questions out they will suddenly ask you to crack a joke, so you better crack some good jokes. Okay, सेठी जाई कहबनी कि सर एमती गवर्नमेंट एमती गला ता ऊपर गोटे जोक, so they will maybe get offended. Okay, do not make any sexist racist jokes. So think of some few good jokes, very harmless jokes on which they can laugh and they will understand that, okay, you are a good comedian. Okay, don't take any risky, do not make any risky jokes, because after it's still a formal interview. देखो स्टैंड अप कॉमेडी रो मते ओटे क्वेश्चन तबे ही मन पड़छि देखो नॉर्मली जदी हमर देखियो बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन सुडा दे हैव गॉटन इनटू ट्रबल बिकॉज़ ऑफ देयर जोक्स ए अराउंड रे क्वेश्चन एस परिबो कि हाउ डू यू थिंक अबाउट इट हमर क्रिएटिव लिबर्टी अछि कि नहीं, फ्री स्पीच अछि कि नहीं, एम द टाइप क्वेश्चन एस परिबो Article 19 clause 2 19 clause 1 19 1a ये सब जिन सही पचारि पारे माने देखो कन्वर्सेशन को वे रे भी जाई पारे. You think of 1 2 3 4 लेवल केते लेवल पर्यंत माने जाई पारे नले स्टैंड अप कॉमेडी सी तो स्टैंड अप कॉमेडी हे पारे नले सी कॉमेडी रु धरिवे कि हमर ओडिसा रे के कॉमेडियन जदी अछन ताको विषय रे को. You might also have to explain to them what is stand up comedy because they are of some few generations. that I can, but हाँ जदि टिके माने मोर सा टेंशन थला ये कि माने फॉर्मल ये रे सेटअप रे जे कोनसी प्रकार ये रे माने करी होबा कथा कि नुहे मु सेटा पचरे चाहूँ. अरे देखो जदि तुम फॉर्मल इंटरव्यू रे somehow you can make them relaxed, हसई दल दम बहुत भलो कथा बहुत बढ़िया जिंस स्मूथली हमर पॉइंट होची इंटरव्यू टा फॉर्मल रहिबो बट स्मूथली जिबा दरकार अछि. जेतेबेले इंटरव्यू टा बहुत स्मूथली कन्वर्सेशन वे रे जाउची ना, you will get good marks because they will also have a good time. They don't want कि तांको सामने रे गोटे पिला आस्तो पूरा एते सीरियस ही बसताओ कि तांको ही क्वेश्चन पचारे खराब लागुची है ना. तो इफ जदी सीरियस कन्वर्सेशन भितर भी सन तुम जोक मारियो कहले जोक मारो से माने हसंतु रिलैक्स होंतु तापर एनवायरनमेंट टा ही देखियो गोटे चेंज ही जिवो गोटे बहुत स्मूथली जिवो हसी हसी से तुमको विदा कर दे, you will get good marks. It's an advantage for you. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, anyone else? Sir, Yes. example, a few more phrases that we should definitely avoid. What else? Definitely you should definitely avoid phrases like honestly, to be true, or to be honest, you know, in or like, you know, then hame informally em diko she was like this, I was like this, so same thing because it's a formal interview. And of course that thing ki can I guess or on mane I'm guessing this, it's a guess word use kariya nahi, kichi bhi informal jinso use kariya nahi. Yes kohibe, yeah kohibe. Okay, kichi pila ko yeah sir, so they will get irritated because they are not your friends na, so they'll get irritated. Do know this for sure that they are a few generations above you, so they will take this respect thing very seriously. Same question जो पिलाटे पचारथला कि नमस्कार करिवो और हेलो कहिवो, हेलो हाय देखो, they will allow it, they will not say anything to you, but नमस्कार कले ताको दिल को छुइबो. Okay, similarly if you are thinking what kind of phrases to avoid,
you think when you are talking with your parents or some other elderly person who you don't even know that well, what kind of phrases likely you will avoid? These are the same phrases only. never ever show any kind of stereotypes. जदि भी अच्छी भूल रे भी देखियोनी तो मैंने सेटा बहुत ही गोटे नेगेटिव पिक्चर दिए तो एमती जदि किछि गोटे these people एमती जदि किछि गोटे पाटर हट ताले बहुत ही खराब हिजो ता. Suppose you are talking about religious minority and you'll say कि they people, these people, they are not good or something. They'll get really irritated because again, the qualities they are looking for you is one of the qualities is social cohesion. है ना? Leadership is ठीक है, social cohesion is also there. So you should be a leader who brings together people, not someone who divides people. So by the way, यार तो किसी list नहीं एमती word तो किसी list नहीं. Just use your common sense and avoid those phrases and words which are either offensive, stereotypical, or or informal. Very very informal. Normally हमें filler वाले use करूँ. So don't use these kind of words. Okay, ठीक है. Then I think friends, that's it for today, and tomorrow we will have a session with Labdhi Jain. Okay, that will be specifically if you have any of the female candidates, they have any specific gender specific questions also, they can ask her. And tomorrow also we are going to have a very engaging discussion. By the way, today also we had a very very nice engaging conversation. So tomorrow also please come. See, the point is you will only have a conversation of 1 or 1.5 hours, but you will I hope that you are getting to know a lot of things and you are gaining from our experience what to do, what not to do. So we'll wind up the session now, and hope to see you tomorrow. Okay. Yeah. Thank you very much. And by the way, thank you, Sarabjit, for giving us your valuable time. He's like a younger brother to me. So yeah, any other doubts you have, you can also post in the group, and if possible we'll try to take it up. Please do not text him or me personally because we have very very limited time, and here also we have a very hectic schedule. But yes, apart from that, any other queries you can also ask Shreyang sir, and if on the basis of demand of the students also, we'll try to take up some special sessions if needed at all. Okay? Yeah, like before ending the session, I would just like to wish you all the best for your upcoming interview, and may the God be with you, and basically वहां जाके best अपना देना. Just एक चीज रखना, be confident with whatever you are prepared. Confident होना है, calm रहना है, और वहां पे बस perform करना है. That's it. All the best, guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.